नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डे 1 ऑफ योगासन सीरीज। आज हम लेग स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करने वाले हैं। ये आसन अगर आप कंसिस्टेंटली करो तो ये आपकी वेट लॉस पे भी हेल्प करेगा। लेट्स क्विकली स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। द फर्स्ट पोजिशन इज मलासन। लेट्स ट्राई सिटिंग इन मलासन। Kneel down, slowly tuck your toe in and then shift your weight behind into Malasana. The correct posture for Malasana is आपका पैर जितना वाइड ओपन है, ठीक है, पैर वाइड ओपन होना चाहिए। आपका जो फीट है दैट शुड बी कम्प्लीटली फ्लैट ऑन द मैट। आप अपने नी पे प्रेशर नहीं दे रहे हो। योर प्रेशर शुड बी फर्मली इक्वली डिवाइडेड ऑन योर फीट। आपके बिग टो पे आपके चारों हिस्से पे। नाउ यू हैव टू जॉइन योर पाम। जॉइन करना है इनसाइड, फ्रॉम इनसाइड योर थाइज, सो दैट फ्रॉम योर एल्बो यू कैन गिव गुड पुश टू योर थाइज। स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, चेस्ट ओपन होना चाहिए। हम इस पोजीशन को नेक्स्ट 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे। आप 30 सेकेंड्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हो। योर ब्रेथ विल बी नॉर्मल। ब्रेथ को एकदम नॉर्मल रखना है। ऑब्जर्व करिए अपने मसल्स को, ऑब्जर्व करिए अपने फीट को कि क्या आपका फीट फर्मली ग्रिप्ड है मैट पे, या आप किसी एक साइड प्रेशर दे रहे हो, या आप किसी एक पैर पे प्रेशर दे रहे हो। सो ट्राई टू शिफ्ट योर वेट इक्वली ऑन बोथ द साइड्स। नाउ वी हैव होल्डेड इट फॉर 30 सेकेंड्स। नाउ फॉर दोज पीपल जो कि प्रॉपर फीट को फ्लैट नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये ब्रिक है। या तो आप ब्रिक यूज़ कर सकते हो, या आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हो टू प्लेस इट बिनेथ योर ग्लूट्स। आपको इसको ग्लूट्स के नीचे रखना है एंड वेरी स्लोली यू हैव टू सिट डाउन ऑन टॉप ऑफ इट। मेक श्योर आपका जो नी है दैट शुड बी वाइड ओपन। प्रेस इट अवे फ्रॉम योर एल्बो। ट्राई टू कीप योर बॉडी स्ट्रेट। आंखें बंद कर सकते हैं आप। लंबी गहरी सांस लेना है। एक्सेल एंड रिलैक्स। इसको रिलीज कर देंगे। अब हम अपने हाथ के सपोर्ट से we are going to sit down on a mat, take some break. We don't have to exhaust our body being in आसन। We are not doing exercise, हम योग आसन कर रहे हैं। योग आसन में हमारा शरीर, हमारा माइंड जितना काम डाउन रहे उतना ज़्यादा हम बेटर फंक्शन करते हैं। Again, take some break. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. And breathe out. Exhale and relax. अब यहाँ से हमें क्या करना है? यहाँ से you have to place your both hand on your knee, firmly grip. You have to tap it down. जब टैप कर रहे हो down, you can notice my big toe. मेरे big toe के सहारे मैं इसको नीचे प्रेस कर रही हूँ। Tap it down. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. You can do it on your own pace. No rush, no hurry. You can go slow. You can pause the video and repeat it.
Slowly, as per your own pace, your breath should be normal. 2 more times. You can do it for 15 to 20 times. I know it will hurt little bit. Exhale and relax. Again, press your elbow into your knee. Keep your eyes closed. Focus on your breath. Exhale and release. Let's take pause of 20 seconds now. Sit straight, spine erect, sit in Siddhasana, chest open. Keep your eyes closed, shoulder roll back. With a deep inhalation, bring your awareness towards the flow of your breath. Feel the flow of your breath moving inside from your nostril into your throat, into your chest, down till your belly. With every exhalation, feel it moving outside from your belly, into your chest, into your throat, from your nostril, back into the surrounding. Breathe in. Breathe out. Calm down the mind. Breathe in and breathe out. Gently relax. Open your eyes. Let's move towards the third variation of Malasana. So again, you have to sit in Vajrasana. Tuck your toe in, get into Malasana. Very important thing over here is focusing on your feet. Now, being seated in Malasana, आपका जो left hand है वो right knee पे जाएगा. आपका जो right hand है that will try to touch your thigh. अगर वो touch नहीं हो पा रहा है, that is also fine. You have to give good twist to your body. Inhale, come back. Right वाला hand left पे जाएगा, left वाला hand again it will try to touch your thighs. Give a good twist. Exhale and relax. I'll show it to you from sideways. Right hand on left knee, left hand trying to touch my inner thigh, my thighs, and give a good twist. Exhale, relax. Same thing you have to repeat on the other side. Give a good twist. Exhale and relax. Let's repeat it one more time. Give a twist. Exhale and relax. And last time, do not hold your breath. Keep breathing. Exhale, relax. Just relax your feet. Tap it down. For increasing blood flow, we are going to sit in butterfly pose. So let's sit in Baddha Konasana. Feet together. Feet together, knee falling side to side. Sit straight, keep your eyes closed
And let's go for flapping. Relax your body. Try to relax your lower back, your thighs. Keep flapping. And very slowly stretch your feet. Sit in Dandasana. Place your palm. Chest open, spine straight. Again, keep your eyes closed over here. Take a deep breath in. Breathe out. While doing any portion of workout, चाहे हम पैर का कर रहे हैं या हाथ का, after every asana, it is very important to relax your body. Very important to relax, to stretch, to increase blood flow in your body. While keeping your eyes closed, you are going to focus on your breath. Throughout asana and pranayam, throughout yogasana, you don't have to hold your breath until I mention it. Very slowly exhale and open your eyes. Perfect. Now let's move towards the fourth asana. Again, while sitting in Malasana, यहाँ पे आपको अपने नी को स्ट्रेच नहीं करना. आपका जो नी है वो नॉर्मल पोजीशन पे होगा. What you have to do with your hand, आपका जो हाथ है वो inside, it will go inside your feet. And very slowly from here you have to start with sit-ups. Exhale while bending forward and inhale while coming back into Malasana. जब आप Malasana में आ रहे हो तो आपका chest open और spine straight होना चाहिए. Let's repeat it 10 times. Once you are done 10 times, you have to slowly again sit down in Dandasana. Take a break, take a pause. Focus on your breath. Tap your feet. Tap it side to side. Exhale and relax. Last two asanas हम उसको खड़ी रहकर करेंगे. So you have to stand on your mat. Let's start with ताड़ासन. ताड़ासन एक ऐसा आसन है जो आपकी स्पाइन के लिए, आपके लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए, आपके स्टिफनेस रिलीफ के लिए, ये तीनों चीज़ों के लिए बेस्ट होता है. ऑल्सो इट इज़ गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन. फीट टुगेदर, बिग टोज साथ में होगा, pelvic slightly tucked in होगा. You have to stretch your arms upward, interlace your finger, stretch your arms towards the ceiling, stand on your feet, get on your toes and simply off your toes. Let's repeat it 10 times.
exhale and relax. We are going to simply walk on our mat from the top till the end. While walking, try to exhale more so that your heartbeat, your body cools down faster. Always while walking, check your posture. Try to correct it. Do not lean on any one side. After 5 rounds, we are going to move towards the last. All these asanas which we are doing will also help you in your weight loss. If you are consistent with it, it is definitely going to show you the result. Come back to the neutral position. As per your comfort, you can walk 5 rounds, you can walk 10 rounds. Whatever cools down, whenever your body cools down, you can come back to the neutral position. One last, we are going to do बैठक. So यहाँ पे आप अपने पैर का डिस्टेंस हल्का सा वाइड ओपन रखना, 1.5 foot. Your toe should be slightly in the outward direction, chest open, और हमें बैठक करना है. We have to do the sit-ups. So it will look like this. Inhale, inhale. Let's repeat it 10 times. Congratulations, we are done with the session. Let your body sweat and very slowly come back seated on your mat. Now from here, if you want, you can lie down on your mat in Shavasana for next 2 to 5 minutes to cool down your body. तब तक के लिए thank you so much for practicing. I hope you be consistent.